So today, one moment, I'm just checking your syllabus once again. Degree, research, bio-waste management. Okay, doctors. Okay. So, I hope you have this syllabus with you, right, guys? Yes, ma'am. ठीक है. So, like, we have already covered offer and acceptance and contract, and we have also studied free consent, correct? Yes, ma'am. Then we have also covered some part of the responsibilities and the clinical practices, duties, responsibilities, etc. Right? Now we'll be moving towards the this waste management, biomedical waste management, like how to be is to be done, what are the different types, categories, how do we treat it, okay? And we'll also see we have also covered this IMC Act and State Medical Act in the last session, correct? Right? So today I'll try to cover most of this part, bio waste medical management, waste management. And in case we can also try to cover euthanasia also. Okay. Okay, ma'am. All right. See, Okay. yeah. Mm. This we have already covered yesterday. This we have covered. This we have covered. Okay. Now we'll talk about privileged communication in medical ethics. What is privileged communication? Any idea? Or even if you want to, read it out first, and then maybe we can try to understand and discuss. I think this will help. So Nancy, can you read it out for me? From what is privileged communication? Okay. What is privileged communication in medical ethics? Confidential information furnished to facilitate diagnosis and treatment by the patient to a professional authorized by law to provide care and treatment. In some states, the person who has received this communication cannot be made to divulge it. Correct. Right. So here, what we are trying to understand, we're trying to understand the privileged communication, which is the information which is sensitive to patients and they have provided to doctors in order to diagnose the problem and provide the treatment, right? For example, their history, for example, their, genetic history, for example, their past, or maybe, anything which has happened in the family. So if that is impacting the, person. So all the important information which is sensitive and confidential to patient, and it has been shared by the patient with the doctor in order to diagnose and provide the treatment, that is your confidential information. And the doctors or the medical practitioner cannot divulge it. That means they can uh, they cannot make it sharing or public, or maybe they can break the confidentiality. They cannot do that. So that, for according to medical ethics, that also has come up as a law for the medical practitioner. ठीक है. तो जो privileged communication है, उसका यहाँ पे मीनिंग ही मोटा मोटा ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर और पेशेंट के बीच में, which is sensitive and private to the patient. ठीक है. अब इसका एक्ट मेरा जो बना है, which says
Section 126, the next one, Section 126, 129 of Indian Evidence Act 1872 deal with privileged communication in professional relationship. So a registered legal practitioner in India is not allowed to reveal such classified information that the client has disclosed to him or any advice that the lawyer had given to his client. ठीक है, मतलब वहां जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है दोनों के बीच में, उसके ऊपर ये 126, 129 का इंडियन एविडेंस एक्ट बनता है, लागू होता है 1872, जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को या इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को डील करता है, ताकि कोई भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो पेशेंट की शेयर हुई है डॉक्टर्स के साथ या मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ, वो कहीं से फर्दर लीक या डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, समझ में आया? Okay, so it is a communication that one cannot legally be compelled to divulge as that to the lawyer from a client. So communication made under certain circumstances as in legislative proceeding such that is not actionable as slander or libel. इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे इतना डीप में नहीं आता। अब हम बात करते हैं बायो, ये जो अभी मैंने बताया ना प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन ये शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है, कि होता क्या है और इसके लिए कौन सा एक्ट है। तो 129, 126 वाला जो है आपका एक्ट 1872, वो इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। नैन्सी, समझ में आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, आप उसको दूसरे वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करेंगे। Biomedical waste जो है shall be segregated into containers, bags at the point of generation in accordance with Schedule 2 prior to storage, transportation, treatment and disposal, and the container shall be labeled according to Schedule 3. अच्छा, ये इसको हम लॉ में क्यों ले आए हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ये ठप्पा लग गया ना, Schedule 2, Schedule 3, ये समझ रहे हो? अब क्या हो गया, आपने कंपनीज में भी देखा होगा या हॉस्पिटल्स में भी कई जगह होता है, वो बॉक्स बने होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, देखा है आप लोगों ने? यस मैम। है ना, जिसमें ड्राई वाला के लिए अलग होता है और वेट वेस्ट के लिए अलग होता है ना, लिक्विड वेस्ट, रिसाइकिल वालों के लिए अलग होता है। तो 3-4 कैटेगरीज, 3-4 कलर बॉक्सेस बना दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है आपके स्पेशली हॉस्पिटल्स में, नहीं जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने आपको कैंटीन्स का बताया फूड वाले में, लेकिन जो आपके हॉस्पिटल्स में, जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शंस के, जब इंजेक्शन जाते हैं, है ना, वी हैव सेपरेट बॉक्सेस फॉर दैट, राइट? यस मैम, अलग होता है ना, जो आपका मतलब एज यू गाइस आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, सो यू मस्ट बी नोइंग बेटर यस मैम। that there are categories defined basis the color in order to segregate the biomedical waste management. करेक्ट? ठीक है, सही बोला मैंने? सही बोल नहीं? यस मैम, यस मैम, एब्सोल्युटली। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल से पहले ही उसको लेवल करके शेड्यूल 3 के हिसाब से सेग्रीगेट कर देना चाहिए। ठीक है, जनरेशन के टाइम पर ही उनको कंटेनर्स में, उनको बैग्स में डाल देना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई मिक्सिंग ना हो उसमें। ठीक है, ठीक है जी? यस मैम, यस मैम। रूल्स क्या है? वैसे तो इसके 2016 में ना थोड़ा सा रूल अमेंड हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा देख लेना। एक ये ना मैंने डिफरेंस निकाला था, इसका पिक्चर प्रॉपर नहीं आया इसमें, और अभी यहाँ पे ना एनलार्ज नहीं हो रही, मैं देखूंगी इसको, कोशिश करूंगी ठीक करने की। ये 1998 में पहले बने गए थे रूल, और उसके बाद 2016 में इसको अमेंड किया गया है। तो डिफरेंस निकाला गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स का, वो एक बार आप नेट पे भी ढूंढोगे ना, आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस? ओके मैम। ठीक है, अब amended rules stipulate that generators of biomedical waste such as hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, etc. will not use chlorinated plastic bags and gloves beyond March 27, 2019 in medical applications to save the environment. ये एक बड़ा रूल, क्योंकि जब प्लास्टिक बैन हुए थे ना, उस टाइम पर ये हॉस्पिटल्स के लिए भी एक रूल निकाल दिया गया था कि क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज होने हैं और ग्लव्स भी नहीं यूज होने हैं।
2019 मार्च 2019 के बाद से। ये एक डिफरेंस आया था, इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है। ओके मैम। अच्छा देखो, मेजर चेंजेस हैं यहाँ पे। रिमूवल ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज एंड टू कंटिन्यू विथ ओनली 4 कलर कोड्स, that no occupier was permitted to establish an on-site treatment and disposal facility if service of a common biomedical waste treatment facility is available within distance of 75 kilometer and 3। ये एक छोटा सा डिफरेंस आया था कि भाई ज्यादा कलर कोड नहीं, 4 कलर कोड्स में डिफाइन किया। अब वो 4 कलर कोड्स आप लोगों को ज्यादा पता होंगे, नहीं तो आप थोड़ा अपने हॉस्पिटल में भी चेक करोगे तो आपको मिलेगा, है ना। क्लियर गाइस। क्लियर मैम। इसकी कैटेगरीज जो है 1998 के हिसाब से, सेग्रीगेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। ये हमने पढ़ाई था अभी, है ना। देन आप कह रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों जरूरी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। एक सेकेंड। गाइस वन मोमेंट। ओके, सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। चलो इसमें तनवीर एक बार इसको फटाफट से पढ़ते हैं। तनवीर। The importance of biomedical waste management. हाँ हाँ हाँ, Biomedical waste एग्जाम्पल management is ये of भी great पढ़ना। significance. आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। इम्पोर्टेंस और ये पर्पस, ये दोनों खत्म करो पढ़ के इसमें। Biomedical waste management is of great significance because biomedical waste can adversely affect health environment, getting serious and getting transmitted. What are the 4 purposes of biomedical waste management? To collect and receive the biomedical waste from healthcare facilities, to ensure proper storage of waste as per their classification, characterization, and mode of treatment and disposal. To analyze and decide the treatment and disposal scheme of waste as per guidelines of MOEF, CPCB, and BPCC. तो क्या समझ में आया तनवीर। मैम ये कि मतलब बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं वो मतलब हैजर्डस होता है, तो इसके लिए मतलब उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करना पड़ता है और मतलब एक सेफ जगह पे स्टोर करना पड़ता है और डिस्पोजल भी सेफ हो। राइट। सो ये स्कीम कौन सी है, ट्रीटमेंट्स की और डिस्पोजल स्कीम इसकी कौन सी 3 गाइडलाइंस है इसके अंदर, MOEF, CPCB और CPCB और DPCB, राइट। अभी अभी आपको क्या करना है गाइस, सो व्हाट आई वांट यू टू, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। guys 5 minutes, give me 5 minutes, I'll connect 5 minutes, ओके okay। मैम।
Okay. So there guys. Hello. Then Yes, ma'am. अच्छा ठीक है. Okay. So basically biomedical waste management, तो I mean although it's very self-explanatory that बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो लॉज बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं बिकॉज इन इन वेस्ट मैनेजमेंट के एक सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो उसको छुएंगे या यूज करेंगे या जहाँ भी वो सराउंडिंग्स में स्प्रेड होगा, राइट. सो इसलिए उसका सेग्रीगेशन, स्टोरेज और सेफ डिस्पोजल जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट the environment, the people, okay, even the life of the people sometime, right. क्योंकि कुछ जैसे स्पेशली आपकी जो सर्जरीज होती हैं या आपके कुछ मेडिकल बिग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपका ये जिसमें आपका थेरेपीज हो, रेड आपके ये कीमो है और इन सब, इनमें जो भी आपके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to be dispersed or to be disposed of properly. Otherwise उनके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं लोगों के लिए, ठीक है, करेक्ट. और उससे आपका ये लाइफ पे भी थ्रेट हो सकता है, राइट, इन केस इफ दे आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली. ओके, राइट. राइट मैम. 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं मेडिकल वेस्ट की. वो वेस्ट जो एक इन्फेक्शियस हो सकता है, हैजार्डियस हो सकता है, रेडियो एक्टिव हो सकता है और जनरल, राइट. Yes, ठीक है. ma'am. ओके. Okay, then we have a classification of biomedical waste. इसको हम दो बेसिक मोटा मोटा कैटेगरी में डालेंगे. एक आपका नॉन हेजार्डियस वेस्ट हो गया और एक आपका हेजार्डियस वेस्ट हो गया, राइट. सो जितना भी आपका ये बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसमें 75 to 90% ये जनरल कैटेगरी है. From some researches that 75% to 90% of biomedical waste characteristics were similar to that of domestic waste and non-risky in nature. लेकिन 10% या फिर 25 to 10% का जो कैटेगरी है, it can be risky in nature in terms of threatening the environment, life of humans, life of birds, life of animals, right. So in that case it is to be handled properly. Okay, ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये मैंने बताया था कि आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ये कैटेगरीज बनाई गई है, एक्ट बनाए गए हैं. जैसे आपका इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट है 1956 जो हम लोगों ने पढ़ा भी था, IMCA. फिर इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट है 1916. फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है 1947. दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक्ट है 1997. डेंटिस्ट एक्ट 1948. AICTE rules for technicians 1987 and paramedical and physiotherapy central councils. So these are different categories in bio law or in the medical law which categorize the different categories or different departments of medical industry. ठीक है. जो आपके जो हायर प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, इंडियन मेडिकल डिग्री में आ जाते हैं. नर्सिंग के लिए पर्टिकुलरली 1947 वाला जो काउंसिल है वो बना हुआ है. दिल्ली के लिए दिल्ली का दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक्ट बना हुआ है 1997. ऐसे डेंटिस्ट के लिए बना हुआ है, AICTE रूल्स टेक्नीशियंस के लिए बना हुआ है. और आपका जो बिकॉज इन लोगों ने क्या किया है ना, जो मोटा मोटा कैटेगरीज हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, उसके हिसाब से डिफरेंट एक्ट्स बना दिए. ओके, ये जस्ट पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है. अच्छा, एक चीज है, जो मेडिकल डिग्रीज हैं, अगर आप अपने उसमें देखोगे ना सिलेबस में, यहाँ पर इन्होंने मेडिकल डिग्रीज के ऊपर भी एक टॉपिक डाला हुआ है. मैंने उसका लिंक दिया है, एक बार आप उसको पढ़ लेना. लेटर ऑन वी में डिस्कस. ओके. ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ पे देखा था,
ये रहा, लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, इंडियन मेडिकल डिग्री, दिस वन। ये आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7th डॉक्टर, 7th पॉइंट। ओके, उसके लिए ना आई हैव शेयर्ड अ लिंक हियर, right? So you can just go through this PDF and then we may discuss later on. Okay? I'm share Okay, ma'am. this if in the group. मैं ये शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। Okay, ma'am. अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी आया हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, सो इसमें लाइक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है आपका डॉक्टर्स का, इन सच कंडक्ट व्हिच इज कंसीडर्ड डिसग्रेसफुल or dishonorable by other doctors of good repute and competence. So this is also like, I mean, one of the category which is okay, one of the category which is used to understand that if there is any disgraceful or dishonorable act done, then this would consider under professional misconduct, and then legal action can be taken basis the kind of loss has happened. ठीक है, मतलब अगर डॉक्टर्स का मिसकंडक्ट, अब वो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट बट मे बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि फॉर डॉक्टर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिहेव प्रॉपर्ली विद द पेशेंट्स, राइट? दे नीड टू बी काम, कंपोज, पोलाइट, क्योंकि कहते हैं ना आधी बीमारी तो बात करके खत्म हो जाती है ना? Because patient themselves come in a panic situation, so if the doctor is not polite, obviously they may not be able to provide, or they may not be able to communicate with the proper information, proper symptoms that they are going through, and then it may lead to the negligence, or it may lead to the improper diagnosis of a problem. ठीक है, तो ऐसी अगर कोई चीज होती है तो इससे आपके आपकी कॉम्पिटेंस और आपके रिप्यूट ना ही बल्कि पेशेंट के, बल्कि अगर विद इन डिपार्टमेंट्स, विद इन हॉस्पिटल भी हो रहा है, लाइक बिटवीन डिफरेंट practitioners, different doctors, which may impact the repute and competence, may be considered as disgraceful misconduct. ठीक है, ओके, ये वैसे तो छोटे पॉइंट्स हैं जो जब एग्जाम में आते हैं, then we don't have the proper matter to write. So that is I have gone through some of the question papers, and from there I have collected these points so that you can easily write in your paper. ठीक है, और आपका सिलेबस भी हम उस हिसाब से करते जा रहे हैं। अच्छा, पीनल प्रोविजंस क्या है कंट्रोल करने का मेडिकल नेग्लिजेंस को? सेक्शन 304A आईपीसी जो है उसके हिसाब से रीड एज 304A causing death by negligence. Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. है ना? डॉक्टर्स के लिए ये क्या बनाया गया है, ये एक्ट आईपीसी के हिसाब से, कि अगर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर द पर्सन पासिस अवे, देन उसके लिए आपका 2 years का इम्प्रिजनमेंट है, और उसके साथ फाइन भी है, और हो सकता है दोनों भी हो, और हो सकता है इससे बड़ी भी इम्प्रिजनमेंट हो जाए, बेसिस द काइंड ऑफ level of negligence or level of misconduct has happened in terms of treating the patient. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन को रिस्की प्रोफेशन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, Yes, ma'am. ओके अच्छा, एक ये है आपका, ऑन विच ग्राउंड कैन डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर बी इनिशिएटेड? किस बेसिस पे होगा ये, जो अगर आप मेडिकल सॉरी डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हैं या लीगल एक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये पढ़ेंगे एक बार। नैन्सी आप पढ़ो बच्चे, इम्पोर्टेंट है ये। Ma'am, from on which grounds? Abuse of position. On which grounds can disciplinary action against medical
practitioner be initiated. Hmm. Abuse of professional position by committing adultery or improper conduct with a patient or by maintaining an improper association with a patient will render a physician liable for disciplinary action as provided under the Indian Medical Council Act 1956 or the concerned State Medical Council Act. Hmm. Okay, so what do you understand in this? Nancy, आप explain करोगे बच्चे? Yes, improper conduct with a patient, like we are not taking attending him properly or guiding him properly. Okay. Okay, तनवीर आप भी बताओ बच्चे. मैम यहाँ पे तो लिखा है एडल्ट्री और इम्प्रॉपर कंडक्ट, मतलब अगर कोई मतलब डॉक्टर अगर अपने प्रोफेशन के जो पोजीशन है उसका अगर गलत फायदा उठाता है Okay. एंड Then उसको कौन सा एक्ट लगेगा? IMC काउंसिल एक्ट 1956. ठीक है, या फिर आपका कोई जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल एक्ट. Obviously, you have correctly explained, Tanveer and Nancy. If there is any improper conduct, adultery act or adultery conduct has happened from the doctor, which is quite abusive or which is uh, creating harm to the patient, that will be considered as misconduct. Okay, and it will be treated or it will be handled under Indian Council Act. State medical. Okay, okay. Now एक आपका ये ना इसके लिए व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से जो है इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है. ओके, अच्छा. नाउ यू टेक 5-7 मिनट्स, लेट्स कंप्लीट दिस. हाँ, यहाँ तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल लायबल अंडर सीपी एक्ट. इसको एक बार ना सेल्फ रीड करके इसको खत्म कर लेते हैं. मे बी यू कैन टेक, आई गिव यू 3-3-6. ओके, आई गिव यू 7 मिनट्स हियर. ओके, इसको इस तरह से कर लेंगे सो दैट वी कैन राइट इन द पेपर ऑल्सो, और आता है एग्जाम में ये. ठीक है, सो we'll discuss after 7 minutes, but then you do read this properly and try to make a note of it also. This is very, very important. Okay, these two topics. Okay. Yeah.
गाइस ये हो गया? तनवीर, नैन्सी, Yes, ma'am. ओके। Yes. छोटा सा है लेकिन कई बार ना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हॉस्पिटल में क्या बोलता है इसमें बताओ। All the patients who are taking services, health services from the hospital are come under Consumer Protection Act. हम्म And if the patients are not treated properly in the hospital, like according to their care or according to their disease, so if they have any complaints, so they have the right to contact to Consumer Court. Very good, wonderful. So Tanvir, clear to you? Yes, ma'am. Clear to you as well? Okay. Then we have like what are the duties owned by the medical practitioner? So basics are like, I mean, they need to have a duty to be very cautious or careful in deciding whether to undertake the case. Then also they need to be careful while deciding the treatment. They need to be again cautious while providing the administration of the treatment. Administration as in all the paperwork. Okay. Then a breach of any of these duties gives a right of action for negligence to the patient. So that means in case if any of above three mentioned is not been handled properly, then the fourth one can come up wherein the patient can take the case and then they can brought it to IMC as per the negligence made or done which has created a negative impact or any sort of harm to the patient. ठीक है? उसके बाद ये एक बेसिकली प्लेज दिया हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, जहाँ पे वो बात करते हैं कि आई सोलमनली प्लेज माई सेल्फ टू concentrate my life consecrate my life to the service of humanity and maintain utmost respect for human life from the time of its conception, and I shall practice my profession with utmost conscience and dignity. ठीक है, ये एक pledge है जो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके have to go through that. ठीक है, उसके बाद ओके देन दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग. क्या होता है यूथेनेशिया, पता है आपको? Any idea? Yes, ma'am. It is basically killing someone, but on his consent, his or her consent, with medical by inducing medicine or drugs, narcotics, to be specific. For what? नैन्सी आप बताओ, कुछ पता है आपको? नैन्सी Ma'am, no, ma'am. ओके, यूथेनेशिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में तो थोड़ा देर से आया था, मगर इट इज देयर इन इंडिया आल्सो, जहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर्स या पेशेंट्स, इनफैक्ट पेशेंट की बात की जाए तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी खुद की मतलब मेडिकल कंडीशन वर्स हो जाने पर दे वांट टू ऑप्ट फॉर द डेथ, राइट? समझ में आया? Yes, It is ma'am. like killing somebody without pain or wants to die because that person is suffering from the injury which cannot be cured or which is something that is not at all treatable. उसको बोलते हैं यूथेनेसिया. अब इसके काफी सारे मतलब अगर आप इसके बारे में स्टोरीज पढ़ोगे ना तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ
acts which has happened, because इसमें ना थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कि पेशेंट, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. आई मीन दे वांट टू किल देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ सफरिंग, और इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द पेन दैट दे आर गोइंग थ्रू, राइट. तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं यूथेनेशिया. ठीक है. इसमें पहले हम लोग पढ़ने से पहले आई थिंक एक काम करते हैं, पहले इसको ना आप लोग थोड़ा सा स्टडी करो. इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट विल बी गुड इफ यू कैन ऐड इनपुट टू दिस. तो ये डिस्कशन हमारे लिए ज्यादा इजी होगा. ठीक है. और ये हेलसिंकी डिक्लेरेशन भी अगर आप पढ़ के आओगे ना घर से, तो वी कैन डिस्कस दिस एज वेल. Ma'am, share the PDF in the group. I will share it for you people. ये वाला जो Okay, ma'am. लास्ट वाला ये जो टॉपिक है ना, ये यूथेनेशिया और हेल्थ, मैं इसको एक बार इससे शेयर कर लेती हूँ फाइल को. उसके क्योंकि थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा ना, इसमें ये थोड़ा सा रिस्की टॉपिक है. रिस्की इन द सेंस लाइक इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक आल्सो. सो आई वुड like to have some inputs from you guys also in terms of discussions. So for that, if you can come prepared, and then we can do the discussion. वैसे ना इस फाइल के अंदर अभी मुझे थोड़े से नोट्स और ऐड करने हैं, बट कोशिश ये रहेगी आप लोग थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं क्या, नैंसी एंड तनवीर, कैन यू पीपल डू सम होमवर्क, do some Google and try to study this, or you want this file to be shared? Ma'am, on the particular topic. हाँ, बस एक आपने यूथेनेशिया के पढ़ना है, और एक ये पढ़ के आओ अच्छे से. देन आप पढ़ के आओ ये हेलसिंकी. Okay, ma'am. टॉपिक्स पढ़ के आओ आप लोग. इससे क्या होगा ना, हम लोग थोड़ा सा ये है ना, लास्ट में देखो एक आपका ये वाला, ये लास्ट 2 टॉपिक्स. ठीक है. आई थिंक दैट विल हेल्प अस टू गेट सम इन्फो. ठीक है जी. Okay, ma'am. इसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर परस्यू करेंगे. बाकी मैं कोशिश करती हूँ कुछ क्वेश्चन पेपर्स की भी. आज थोड़ा सा मैं 5 मिनट आपको जल्दी छोड़ूंगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टॉपिक, बिकॉज अभी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोटा सा हो, फटाफट करके देख ले. तो विल बी डूइंग फर्दर डिस्कशन इन द अपकमिंग क्लासेस. अच्छा, बाकी इसके अलावा एनीथिंग दैट यू पीपल वांट टू शेयर, और कुछ आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे हैं क्या? तनवीर, नैंसी? No, ma'am, मैंने अभी नहीं देखे. भी नहीं No, ma'am, देखे. not एक तो हाँ, एक तो वो मंगा लेना. और अब दूसरा है वो ग्रुप के ड्राइव पे ही है. गुड ड्राइव पे है. अच्छा, मैं Yes, देख ma'am. लूंगी एक बार. आप मुझे निकाल के व्हाट्सएप पे भेज दोगे क्या? Sure, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, आप मुझे भेज देना, है ना. आई विल ट्राई टू स्टडी योर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ वो निकाल लेंगे. लेकिन 2-4 ना ये जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, एक आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में से क्वेश्चन आता ही आता है आपका. एक आईएमसी एक्ट में से क्वेश्चन आता ही आता है. देन आप लोगों का ये मेडिकल प्रोफेशन, इंडियन मेडिकल डिग्री में से भी एक क्वेश्चन बनेगा. 3. अच्छा, उसके बाद आपका ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है. तो 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं. मिसकंडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है ना. 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. ये आप अपने पास जरूर नोट कर लेना और इसको फर्दर पढ़ लेना. ठीक है. बाकी हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर्स और गो थ्रू करेंगे, एंड देन विल हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. Okay, ma'am. कल हम लोग क्लास नहीं लेंगे, हम लोग मंडे या ट्यूसडे में फिर प्लान आउट करते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. All right then. Any input or anything you want to add? अब नो मत बोलना. बच्चे सोच रहे हैं हम क्या बोले. नैंसी स्माइलिंग.
Nothing to add? No, ma'am. Tanvir, nothing to add? No, ma'am. Bad, bad. Chalo, no problem. Anyways, just kidding. So, ठीक है, we'll catch up in the next class. Trusted class. Sorry? This is the only interested class. Acha. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Okay, all right. Then we'll connect in the next class. Okay? ठीक है? Okay. Chalo. Thank you. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye.